हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब काफी अच्छा कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हम जा रहे हैं आपके बुक का नया चैप्टर स्टार्ट करने, चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम क्या है, वर्ब्स। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। द वर्ब इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शोज व्हाट समवन और समथिंग डज और व्हाट स्टेट समवन और समथिंग इज इन। सो इन शॉर्ट, a verb indicates an action, an event or a state. So now kids, let's try to do a exercise question. The first question is, choose the most suitable verbs from the brackets and complete the sentences. The first one has been done for you. Okay? तो बच्चों, यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स में ना वर्ब्स दिए हुए हैं, आपको मोस्ट सुटेबल वर्ब से उस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। ओके, सो फर्स्ट वन आपके लिए किया हुआ है, सेकंड ट्राई करते हैं। द ईगल डैश डाउन ऑन इट्स प्रे। तो ऑप्शन क्या है, फ्लोट, क्रैश्ड और सूप्ड। तो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है सूप्ड। ओके, नेक्स्ट, द माउस डैश इनटू इट्स होल। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है स्कैम्पर्ड, क्रॉल्ड और मूव्ड। सो इसका करेक्ट आंसर बच्चों बताइए क्या है, मूव्ड। ओके, इसी तरीके से आपको बाकी भी करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। Here are 5 incomplete sentences about a stormy night. Choose the correct verbs from the box and complete the sentences. The first one has been done for you. For example, the storm dash all night dragged. इसी तरीके से नेक्स्ट वन, the rain dash against the window panes. तो बच्चों, ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं आपको पैटर्ड, हाउल्ड, फ्लैश्ड, रम्बल्ड, रेज्ड। इसका करेक्ट आंसर क्या है, पैटर्ड। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, द थंडर डैश इन द डिस्टेंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है रम्बल्ड। तो बच्चों, इसी तरीके से बाकी के भी 2 सेंटेंसेस आप खुद ट्राई आउट करेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन। चूज फ्रॉम दिस बॉक्स द बेस्ट वर्ब फॉर ईच सेंटेंस given below and fill in the blanks. The first one has been done for you. Okay, let's see. ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, पहला आपके लिए किया हुआ है, नेक्स्ट है द ओल्ड गेट तो क्रीक्ड बच्चों। नेक्स्ट, द सीगल्स वर व्हीलिंग इन द एयर अबव आवर हेड्स। तो इसी तरीके से बच्चों आपको ये फिल करने हैं। सो बच्चों, इसी तरीके से आपको बाकी वर्ब्स भी फिल करने हैं इनमें। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। सो नाउ किड्स, लेट्स सी अनदर टॉपिक, काइंड ऑफ वर्ब्स। देयर आर 3 काइंड ऑफ वर्ब. A verb which takes an object is a transitive verb. For example, my sister posted a letter last week. Then, birds build nest. Now next, a verb with no object is an intransitive verb. For example, the baby cried. He played. So, next is auxiliary. It helps the main verb to form a tense. These are of 2 kinds. First is primary auxiliaries. Be, do, have and their various forms. For example, in this bracket you can see that be is am, are, was, were, do, does, did, have, has, had. Okay, next is modal auxiliaries. Can, could, shall, should, we, would, may, might, must, dare, need, ought to, used to. So now kids, let's move to our exercise. So चलिए बच्चों, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। So फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, fill in the blanks with appropriate transitive verbs. So आपको यहाँ पे verbs दिए हुए हैं, आपको इन verbs को यूज करके fill in the blanks fill करना है। चलिए करते हैं। So बच्चों, पहले सेंटेंस क्या है, I dash an umbrella yesterday. तो बच्चों, suitable verb को fill कीजिए। So आपका आंसर होगा I bought an umbrella yesterday. Next है Sarita dash a number of stories. Sarita narrated a number of stories. इसी तरीके से बच्चों आप बाकी क्वेश्चंस भी ट्राई आउट कीजिएगा। Now let's move further and see the another topic, the correct use of verbs. We can use 2 auxiliaries helping verbs with one main verb only if the main verb agrees with both the auxiliaries. Example, I never have and never will kill a bird. I never have killed and never will kill a bird. इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट है आपका I never have and never will hurt a bird. So next क्या है इसका, I never have hurt and never will hurt a bird. Now next third, no mother can or ever will kill her own child. Now let's see the another point. We can use one auxiliary helping verb with 2 different main verbs if the second auxiliary will be the same as the first. For example, first point, 10 students have passed and 6 failed. Now 10 students have passed and 6 have failed. Now another one, second point,
10 students have passed and 1 failed. The next sentence, 10 students have passed and 1 has failed. Now, a phrase that begins with the ing form of a verb is called the participle phrase. Such a phrase must be in proper agreement with the noun or pronoun that it qualifies. Example, sitting the gate, a scorpion stung him. Sitting at the gate, he was stung by a scorpion. Next, or while he was sitting at the gate, a scorpion stung him. Now second sentence, being a rainy day, I didn't go out. It being a rainy day, I didn't go out. In the another point, students should be very careful in the use of the following verbs as they may often be confused. First is lie, lay, lain. Intransitive. So the points are, she lay down to have some rest. She lay down to have some rest. I want to lay down on the green grass. I want to lie down on the green grass. Next है आपका lay, laid, laid. Transitive. Okay. The hen has lain no egg today. The hen has laid no egg today. She laid the baby on the bed. She laid the baby on the bed. Next is hang, hanged, hanged. The prisoner was hung and the prisoner was hanged. Hang, hung, hung. She hung the cloths on the line to dry. She hung the cloths on the line to dry. Raise, raised, raised. He rose the baby above his shoulders. He raised the baby above his shoulders. Next, overflow, overflowed, overflowed. The river has overflown its banks. The river has overflowed its banks. Then beat, bore, borne. So I have bore this responsibility for a long time. I have borne this responsibility for a long time. Now let's see common mistakes in the use of verbs. First is enjoy must be followed by an object. We went for a picnic and enjoyed very much. He enjoys good health. We enjoyed our picnic yesterday. We went for a picnic and enjoyed ourselves very much. Fifth point, we went for a picnic and enjoyed it very much. Now let's see, hope means to expect something good. I hope she will fail. I fear she will fail. Next, I hope she won't get better. I hope she will be better soon. Next, expect means to think that something good or bad may happen. We expect we shall succeed at last. We expect prices will not come down. Next, look at. Look at implies attention. See does not imply attention. Please see at the blackboard. Please look at the blackboard. I saw a book on the table. Next, listen to implies attention. Hear does not imply attention. I can listen to his voice. I can hear his voice. You should hear what the teacher says. You should listen to what the teacher says. We say our prayers, not speak our prayers. Okay? For example, I speak my prayers daily. तो बच्चों ये गलत है. I say my prayers daily. We don't say make a goal. We say score a goal. Like they made a goal or now they scored a goal. We deliver, make or give a speech. First is he said a speech, he delivered a speech or he made a speech. Next, we never use pain in the continuous or progressive form. My tooth is paining. The answer will be my tooth is aching. Okay? So kids, इसी तरीके से आपको अब क्या करना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करते हैं. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है रीराइट ईच सेंटेंस करेक्टली. सो फर्स्ट सेंटेंस बच्चों, इसमें बताइए आंसर क्या होगा. इसका आंसर है हिज हार्ट ब्रिम्ड विथ लव. नेक्स्ट, वॉकिंग इन द गार्डन अ स्नेक बिट हर. तो आप क्या लिख सकते हैं, वॉकिंग इन द गार्डन अ स्नेक स्ट्रक हर. ओके, तो इस तरीके से आप सुटेबल वर्ब को रिप्लेस कर सकते हैं. चलिए, बाकी क्वेश्चंस बच्चे आपको खुद ट्राई आउट करने हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर किड्स. नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू चैप्टर. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग. बाय बाय स्टूडेंट्स.